a baby, you took bath. Yeah, baby, baby took bath. Hello guys, welcome back to our channel Shravi Life in Abroad, and I am very happy Anja will complete her third month on tomorrow on 29th of June, and I am very happy to see her growing, and day by day I am enjoying her new activities. So today's weather is cloudy, and in the morning it was raining also, so अच्छा लग रहा है. और एज बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं देख रही हूँ, ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि जैसे मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स से जैसे मैं सुन रही हूँ कि इस मंथ में बेबी ये एक्टिविटी करने लगेंगे, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा तुम देख पाओगे कि वो थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं. बट मैं देख रही हूँ कि कुछ एक्टिविटीज़ एंजा की 1 मंथ आगे चल रही है. अपनी एज ग्रुप से वो 1 मंथ आगे चल रही है एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग. बिकॉज जैसे कि बच्चा करवट लेना सीखता है. एंजा ने 3rd मंथ अभी देखिए कंप्लीट होगा कल से, बट करवट लेना सीख लिया है. बहुत सारी चीज़ें जैसे हम कुछ भी एंजा से बात करते हैं तो हम वो सेंस कराते हैं कि हम माउथ को प्रॉपर ओपन करके और उससे जो वर्ड्स बोलना चाहते हैं वैसे बोलते हैं. तो एंजा बहुत गौर से देखते हुए कोशिश करती हैं, ट्राई करती हैं. और एंजा जैसे कि अपने फीट के फोर्स को फ्लोर में कोशिश करती हैं लगाने का कि जैसे कि वो स्टैंड हो जाएंगी खुद से. बट मैं प्रॉपर कि उनके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना हो, नेक में कोई प्रॉब्लम, बाकायदा हम पकड़ते हैं. बट हम देखते हैं खुद से बड़ी एक्टिव है. एक्चुअली एंजा जब मेरे बेली में थी तब भी बहुत एक्टिव थी. डॉक्टर के पास जब स्कैन कराने जाते थे तो बेबी को मतलब ऐसे फाइट कर पाना मुश्किल होता था. बेबी के हार्ट बीट, कभी बेबी इधर मूव कर रही, कभी उधर मूव कर रही है. सो चलिए देखते हैं कि आगे क्या एक्साइटमेंट चीज़ें हैं. व्हाट वी विल डू फॉर एंजाज 3rd मंथ सेलिब्रेशन. और क्योंकि रवि का ऑफिस भी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बट जो भी कुछ पॉसिबल होगा करूँगी. और हाँ, स्पेशली मैं इस बार एंजा के लिए केक खुद से बनाने वाली हूँ. और एंजा जैसे जैसे ग्रो हो रही है उनका केक का साइज़ भी बढ़ता जा रहा है. एंजा को मैंने स्लीप करा दिया है आफ्टर टेकिंग बाथ. और शी वॉज फर्स्ट टाइम वेरी काम एंड रिलैक्स आफ्टर टेकिंग बाथ. रिलैक्स होने के साथ साथ वो स्लीपिंग मोड में जल्दी आ जाती हैं. तो जैसे ही मैं उनको बाथ टब से बाहर लेती हूँ टॉवल में, शी स्टार्टेड क्राई. बट टुडे आई सॉ कि वो अच्छे से अपनी बॉडी को वाइप करवा रही थी, और अच्छे से मैंने उसकी बॉडी में उसको मॉइस्चराइज वगैरह करके क्लोथ्स वगैरह वियर कराए. शी वॉज वेरी काम. तो मतलब फर्स्ट मोमेंट, मैं इस मोमेंट का वेट कर रही थी. धीरे धीरे से मैंने वेट किया कि एंजा बाथिंग टाइम को एंजॉय कब करेंगी, क्योंकि शुरुआत में कुछ टाइम मतलब ऐसे ही 3-4 टाइम्स थोड़ा सा क्रैंकी होती थी उस टाइम पे. बट फिर काम होने लगे, वो बात को एंजॉय करने लगे. अब आफ्टर बात के टाइम को भी जब मम्मी उनको मॉइस्चराइज कर रही, क्लोथ्स वियर करा रही, डाइपर वियर करा रही हैं, तो भी काम है. तो मुझे बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा कि ये चेंजेस हैं बच्चे के ग्रोइंग के साथ साथ. बच्चा समझना शुरू कर रहा है कि हाँ अब ये चीज़ क्या क्या हो रहा है उसके एनवायरनमेंट में. और मैं आपको दिखाती हूँ, सब बहुत प्यार से स्लीप कर रही है. और एंजा को मैं यहाँ पर लंच प्रिपेयर करते करते कैमरे में देखती भी रहूँगी कि एंजा अवेक तो नहीं हुई, स्लीप कर रही है अभी भी. तो मुझे एंजा की एक्टिविटीज़ कैमरे के थ्रू मालूम होती रहेगी. एंजा को बात कराते टाइम ये ग्रोसरी का सामान भी यहाँ पे आ गया. ये मिल्क वगैरह के बॉटल्स हैं, और यहाँ पर है कुछ सामान आ तो जाता है, फिर ऐसे सेट करो बैठ के. तो एंजा के बर्थडे के लिए ये वाला केक मैंने लिया है डॉक्टर ओटकर का. ये मैं बेक करूँगी, देखते हैं बेक करने के बाद कैसा बनता है. और ये कुछ मैंने ऐसा ही डेकोर के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी.
देखते हैं बनने के बाद कैसा बनता है. Oh yes, you are very energetic. Who is a strong girl? Who is a strong girl? Mommy is a strong girl. Shreya, mommy is a strong girl. Who is? Anja. Anja, you are very, very strong. Yes, yes, my baby, yes. Yes. Yeah, yes, yes. What you are looking? Looking at camera. What is this? मैंने केक रख दिया था बेक होने के लिए. केक बेक हो गया है एंड शी वोक अप एंड नाउ शी इज एंजॉयिंग. Anza, peekaboo, peekaboo. Anza, come on, baby, come on. You can do, baby, you can do. Yes, come on, baby. Come on, baby, come on, come on. Come on, Anza, come on, baby, come on. Come on, baby, come on. Come on, come on, come on, come on. Anza, wow. Anza, wow. Anza, wow. Come on, baby, come on, baby, come on, come on, baby. Wow, Anza. Oh. Oh, very happy, Anza, very happy. Anza, very happy. Yeah, baby, yes. Yes. Oh, my baby. Anza, baby, yes. Yes, baby, you are doing good. Mommy very happy for you. Mommy very happy for you. Yes, peekaboo. Peekaboo. La la. Next piece. What is inside? Peekaboo. Wow, Anza, wow. Come on, baby, come on. Yes, yes. Who is a strong baby? Who is a strong baby? Tweet, tweet. It's floppy chick. Say, go to bed. And please be quick. अब हम लोग भी sleep करें, थोड़ा rest करें. So now it's evening time and after rest and some work, I'm leaving now to take a walk outside with Anza and I have ready her too. और बहुत खुश है वो क्योंकि जैसे ही मैं उसको क्लोथ्स चेंज कराती हूँ तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा फील करने लगी है कि शायद हम कहीं जा रहे हैं और मैंने उसको उसके स्टॉल में बैठा दिया है. Anza, baby, are you happy to go outside? Baby happy? Happy, happy? Happy, happy? Tweet, tweet. Hush, hush. Mommy loves you. Oh, so lovely. चलिए चलते हैं. We are going outside, yes. Come on. Yeah. Yes. Yes. Yes.
Look how much Anja is happy. Let's go. Wow, Anja, weather is very nice. Anja इवनिंग वॉक को वाकई बहुत इंजॉय करती है. वही है ना कि बच्चों से जैसी चीज़ें कनेक्ट कर दो, फिर बच्चे धीरे धीरे उन चीज़ों के हैबिचुअल होने लगते हैं. ये जब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो इसी टाइम बोलेंगी, मम्मी लेट्स गो आउटसाइड. और थोड़ी देर वॉक करने के बाद मैं देख रही हूँ एंजा का मूड अभी भी अच्छा है. शी इज़ प्लेइंग है. तो मैं यहाँ आ गई हूँ. एक यहाँ पे टेडी स्टोर है जर्मनी में, जहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती हैं घरेलू. और जैसा कि कल एंजा का 3rd मंथ सेलिब्रेशन भी है, तो मैं सोच रही हूँ देखती हूँ क्या मिलता है यहाँ से और चलते हैं. तो ये एक छोटा सा कुछ इस तरीके का स्टोर है, जहाँ पर आपको स्टेशनरी और क्राफ्ट और बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ चीज़ें वगैरह मिल जाएंगी. कुछ डेकोर पीसेस भी मिल जाते हैं. बट आज इधर से निकल रहे हैं तो सोचा कुछ लिया जाए. हाँ एंजा, क्या ले सकते हैं आपके लिए बेबी? क्या लूँ? अभी तो एंजा को कुछ भी नहीं पता. क्या हो रहा है, क्यों आए हैं यहाँ, क्यों जा रहे हैं बाहर, कुछ नहीं पता. हमारे बालकनी के लिए कैसा है अम्ब्रेला? कैसा है? Who's this? This is your daddy. Anza's daddy. This is in my hand now. Do you want to take? Want to play with this? So अभी मैं अपने अड्डे में आ गई हूँ, जहाँ हम अक्सर लंच और डिनर के लिए आते हैं. तो स्टिल एंजा इज़ क्वाइट, तो मैंने सोचा कि मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ. और इवनिंग टाइम है, वेदर इज़ गुड, कॉफ़ी एंजॉय करते हैं. क्यों एंजा? मॉमी डॉटर टाइम. We came for date. Hello. Hello. Bitte schön. Anza, we are waiting for coffee. Oh, yay! Ring, ring, Gavi, again another day. Me too, Anza wants it. Ring, ring, Gavi. Oh, wow, wow, wow. Anza, mommy loves you. Anza, who's a strong girl? Who is a strong girl? Tell me, who is a strong girl? Anza, you are very strong, very energetic. Mommy always says this. Yeah. And where is Dada? Where is Dada? आज रवि ऑफिस के एक इवेंट में गए हैं, तो उनको लेट नाइट हो जाएगा. अराउंड 12 o'clock नाइट तक वो आ पाएंगे वापस. तो यहाँ पर मस्ती हो रही है मम्मी की, तोतो की. यस, बड़ा मज़ा आ रहा है एंजा के साथ. ये बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस है. एंजा, व्हाट मम्मी इज गोइंग टू हैव? लाते macchiato. Latte macchiato. Oh my god. Who's a strong girl? You are. How much you are? How much? Oh my god. Too much strong. This is too much strong girl. Oh my god. Let me finish this.
यार कभी कभी तो बताऊँ बड़ा वैसा लगता है कि यार मैं इतना घबराती हूँ, बट एंजा बहुत सपोर्टिव है। इससे ज़्यादा एक बच्चा क्या सपोर्ट कर सकता है, इतनी देर तक कूल एंड काम रहना। Baby Anza is enjoying massage time. This is massage time. Baby Anza's massage time. Ho 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 ho. La 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 la.